Okay, comparing quantity, this class I think we had taken 6 or 7 lectures or maybe 8 lectures to complete before. So we'll be revising the same in 2 or 3 lectures now. So comparing quantity is basically about percentage. So when I'm talking about percentage, I want you to first we'll discuss about percentage, then profit, loss, and in the end we'll take up SICI. So percentage will break it down as per cent, right? And cent is nothing but per 100. So when I'm saying 60% of 700, this means I'm saying you find 60 per 100 of 700. 60 per 100 is basically 60 by 100 of 700. So this is 60 per 100 of 700, right? This is what is meaning of percentage. So ready? We'll take half an hour, few questions on percentage, starting from level 1, then level 2, and 2 or 3 questions of level 3. So find 60% of 200. This we know is 60% of 200. इसको आप याद करें. That is x% of y is x by 100 into y. So find 60% more than 200. Okay? So this we have discussed that a number itself is always taken as 100%. 100% class was present. That means 200 students were present. Okay? We were requiring 60% more seats. So जो 100% था उससे 60% हमें extra चाहिए. So when I'm saying 60% more than 200, this actually means I'm talking about 160% of 200. So if I'm talking about 30% less than 50, so ये किसके इक्वल होगा बेटा? हाँ जी, फास्ट 70% of 50. हाँ जी, 100% में से हमें 30% लेस करना है. 70% of 50, which is 70% of 50. ठीक है? Okay. So questions आपके यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेंगे तो 3 टाइप्स के आते हैं. फर्स्ट इज find 7% of 8. So this is x is 7. Okay. इसको अगर आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लें तो पहले उस will say x% of y is z. This implies x by 100 into y is z. So if I'm saying 7% of which number is 8. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन फॉर्म करने में यू फेस सम इश्यूज है ना, थोड़ा सा. फ्यू स्टूडेंट्स, नॉट ऑल, फ्यू स्टूडेंट फेस सम इश्यूज. सो ये जो विच नंबर है इसको आप क्या अज्यूम करेंगे बेटा? X. x. सो इसी स्टेटमेंट को x अज्यूम करके आई विल से 7% ऑफ x इज 8. ठीक है, अब हम ऊपर वाले इसमें हम फॉर्म करेंगे. सो वी आर गेटिंग 7% ऑफ x इज इक्वल्स टू 8. ये हमारी इक्वेशन हो गई. ठीक है. इफ क्वेश्चन इज 32 is what percentage of 128? तो ये what percentage को क्या, what you will take? x%. एंड इसी स्टेटमेंट को हम वापस लिखेंगे. x% of 128 is 32. And what we are getting is x% of 128 is equal to 32. है ना? इज इक्वल, इसके साथ आप इक्वल टू अपने आप ही जोड़ेंगे. डन. ओके. 200% more than a number is 200. Find the number. So 200%
I'm taking few questions and I'll give it to you. 200% more than a number. इस number को क्या assume करेंगे हम? X. X. 200% more. That means I'm talking about 100% से 200% ज़्यादा. So this is 300% of X is equal to 200. फिर से चेक करें, इक्वेशन समझ में आई आपको? Yes, sir. Okay, very good, very good. 20% of 30% of 40. Fine. 20% of 20% of 30% of 40. You know, you solve this, you'll get your answer. Okay, chalo, ready? I'll give 5 questions and let's see who is getting 5 out of 5. First question. Shriyanshu, beta, if I'm talking about 100% of 120, that is 120 itself. But if I'm talking 120% of 120, that's more than 120, isn't it? My answer is definitely more than 120. For the previous question. Okay, okay, okay. Good. Okay, I think we should start the quiz from the next question. Hai na? Few of you have not understood the question well. So 120% of 120. So this is nothing but 120% of 120. Find 120% more than this thing. ठीक है? 120% more than beta हमेशा जो है, that is you will take as find 120% more than 100%. ठीक है? What is 5% more than X? That is 105%. So what is 120% more than X? That is 220%. 220% of this value. Okay? So this answer is 220 by 100 into 120 by 100 into 120. The zeros are getting cancelled, right? So you can solve this. This is 144, 144, and this is 288 and 288. This is 8613. So 3168 divided by 10. So 316.8. So first correct answer by Pratham, Divyansh and Avni. ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं. So what is answer it? 5% more than X. Answer is 105% of X. very good. What is 500% more than X? 600% of X. 600% of X. Very good. ठीक है. What is 90% less than X? 10% of X. तो जो भी लेस, 10% of हाँ जी, X. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. जो भी लेस करेंगे या जो भी इंक्रीज करेंगे, विल ऑलवेज डू इट एट 100%. What percentage है ना? Let me solve this है ना, then I'll give you questions. What percentage of 20 is 30? So what percentage? X percentage of 20 is 30. So X percent of 20 is 30. Equation, I hope you can solve it. What is 20% of 30? So you will say
20% of 30 is x, and you will get your answer 20% है ना of 30 is equal to x. is जहां दिखेगा वो is equal to बन जाएगा. This percentage means per cent, and cent is century, that is 100. Of which number 20% is 30. ठीक है. So 20% of 30 is x. Oh, sorry. Of which number 20% is 30. So you'll say 20% of x is 30. So 20 by 100 into x is 30. डन समझ में आया बेटा ये. चलो आंसर करेंगे फोर्थ वन. चलो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. टेक योर टाइम, आंसर इट. चैट बॉक्स में all three should be together. And first correct answer is by Manol, Soumya, Pratham and Akaisha. Rest all got little confused with the language. No issues with maths, but serious issues with English. Okay, let's together decode what it's saying. So let's call up on mic. Okay, it's Jeshri. Jeshri, please come. Yes, sir. हाँ जी बेटा. A number exceeds 20% of itself. ठीक है, इस नंबर को आपने क्या assume किया बेटा? x. ठीक है, और x किससे exceeds कर रहा है? 20% of itself से. So 20% of itself. Right? Now tell me on this. 10 exceeds 8 by how much? 2. 2. कैसे आया? 10 minus 2 करके, है ना? So x exceeds 20% of x. Equation क्या बनेगी? X minus 20% of x is equals to 40. So x minus 20% is 20 by 100 of x equals to 40. So x minus x by 5 is equals to 40. Solve करेंगे, x is nothing but 50. चेक करें, समझ में आया बेटा आपको? ओके, नेक्स्ट वन. बेटा ये जिसका सही हुआ था प्लीज रेज योर हैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से रेज योर हैंड वाला करते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. A जो है he earns 20% more than B. By what percentage B earns less than A? Manoj, your answer is wrong.
Shanshu wrong. First correct answer by Trinab. Congratulations. Okay, Manol, no second attempt allowed. So Trinab, you can raise your hand. Avni, very good. Raise your hand. And 15 seconds more. Kaisha, it's not correct. Shraddha, very good. Chaurya Saxena, Jayashri. Impressive. इनके correct हैं, they can raise their hand. And it should be correct in the first attempt only. अयान, बहुत खतरनाक आंसर आया आपका बेटा. Let's see here. Time up. A earns 20% more than B. So of course A's earning is more. Okay? So if B earning is X, then A earns 20% more. So A earning will be 120% of X, right? That is 120% of X or 1.2 times of X. That's earning of A. B की earning कितनी है बेटा? B की earning तो X है. So comparative to B, A, B कितना कमा रहा है? B is earning less. How much less B is earning? B is earning 0.2x less than A. Right? So what percentage? So percentage decrease is decrease amount upon original into 100. Decrease amount कितना decrease हुआ? 0.2x. किसके रेफरेंस से डिक्रीज हुआ है? A के रेफरेंस के मुकाबले 0.2x लेस है. So upon original that is 1.2x into 100. So this is 1/6 into 100 है ना. फ्रैक्शन टू डेसिमल हमने याद किए थे. 1/6 is 16.66%. That's my answer. Check करें, any doubt in this? Okay. Excuse me, sir. Sir, can you show the answer again? I'll post the recording है ना, वहां से कॉपी कर लेना. Okay, solve this please. क्योंकि इस तरह का तो भरोसा नहीं करता भी थोड़ा सा. Okay, I'm getting some really good answers. Sir, is 60 the increased amount or total amount? More for rupees 60 beta. 60 rupees में मैं कुछ mangoes जो है I used to buy, but now because mango price has decreased down, I'm able to buy more mangoes. How many more? 4 mangoes more I'm buying. So question is, what is the original price of one mango? ठीक है?
and I'm getting original price of one mango as ₹20. I don't know how you are getting that ₹20 for one mango. Okay, 15 seconds more. चलो, let's share it out. हाँ जी, I like to call Akaisha. Akaisha, कैसे किया बेटा आपने? ओके, ऋषिता बेटा, वन मैंगो की कॉस्ट ₹60 नहीं हो सकती है ना? ओके, श्रद्धा, हाउ यू डिड बेटा? Yes, sir. So I did. So the initial cost of the mangoes were 60. So the final cost I took it as X. फाइनल कॉस्ट X. ओके, Yes. डिक्रीज Yes, बाय sir. 25%, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं फाइनल कॉस्ट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. So the quantity that we have now it is 3/4. Uh, so then the 4/3 we can also write it like 1. ओके, चलो, लेट्स सी इट हियर, है ना? व्हाट यू आर सेइंग, है ना? लेट मी कीप वर्ड टू दैट. सो देयर आर फ्यू वेज ऑफ सॉल्विंग इट. सबसे पहले तो बेटा, अगर एक मैंगो जो है, एक मैंगो की कॉस्ट अगर 25% कम हो गई है, ठीक है, दैट इज इट्स बीइंग नाउ 75% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और इट्स बीइंग सोल्ड एट 3/4 ऑफ ओरिजिनल प्राइस. तो जब हमने x नंबर ऑफ मैंगोज खरीदे हैं, ठीक है, फॉर ₹60, अब सेम नंबर ऑफ मैंगोज वी कैन बाय फॉर ₹45, क्योंकि मैंगोज की प्राइस जो 25% डाउन हो गई है, तो अब हमें 25% लेस पे करना पड़ेगा, ठीक है. सो इनिशियल पेमेंट हम कितनी कर रहे थे? इनिशियल पेमेंट आई वाज मेकिंग वाज ₹60, and final payment, how much I have to make? Final payment, now I have to make 75%, 25% less ना, 75% of 60, which is 45. तो मेरे पास कितने पैसे बच गए बेटा? I am left with ₹15 with me, ठीक है. इन ₹15 से मुझे कितने मैंगोज मिले? 4 मैंगोज, है ना? 4 मैंगोज. जितने पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, उसी से मैंने एक्स्ट्रा मैंगो लिए हैं. Agreed on this? So that means each mango, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? each mango cost price is 15/4 rupees. बट ये कॉस्ट प्राइस किसका है? दिस कॉस्ट प्राइस इज फॉर फाइनल दिस थिंग, है ना? 25% रिड्यूस होने के बाद है ये कॉस्ट प्राइस. ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी. लेट्स टेक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है. सो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? दिस इज ₹60 इज देयर. पहले मैंने x मैंगोज खरीदे हैं, ठीक है, with the cost price of y mango. This is number of mangoes. This is, sorry, cost of mangoes. Cost of one mango, and this is number of mangoes. This is how much? 60 rupees, right? Now cost of each mango is reduced. So cost of each mango has become 3/4 of x. So number of mangoes will become y dash, which is equals to 60. Done. Now अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, सो कंपेयर करने पर वी आर गेटिंग x into y is 3/4x into y dash.
So y dash number of mangoes is equals to 4 by 3 of y, which is y plus y by 3. ठीक है, this is original, this is extra. एक्स्ट्रा हमने कितने लिए हैं बेटा? We have got 4 extra, है ना? ये मेरे पास ओरिजिनल मैंगोज तो मिल ही गए मेरे को, साथ में y by 3 एक्स्ट्रा मिले हैं. So this extra you will compare y by 3 is equals to 4 or y is equals to 12. So originally I was purchasing 12 mangoes, and then you'll say CP of 1 mango is equals to cost price upon total number, that is rupees 5. हाँ जी, क्लियर है? चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, है ना, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर इन दिस. ओके, ये वाला नहीं लेते हम. ओके, सॉल्व दिस. अनिकेत, अगस्त्य, अनुष, तन्मय, रोल नंबर बेटा. Yes, sir. राइट डाउन रोल नंबर. हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट. सो ये आप याद रखेंगे, x% of y is same as y% of x. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x by 100 into y, इसको करेंगे आप तो this is y by 100 into x. So both are coming as x into y by 100 is xy by 100. So if I am saying 20% of 15 or 15% of 20, both are exactly same. Sir, do Right, we have right. to lower our hands? हाँ जी बेटा, you can lower the hands, you know. Must be feeling tired now. Okay. Read this question. I'll be solving it here, and after this we'll be moving to CP, SP, MP questions. Okay. Kush beta, SICI will be taken tomorrow. So ठीक है, इसको डिकोड करते हैं. ऑरेंज में बेटा स्टार्टिंग में, ठीक है, देयर इज 20% वाटर, 20% ऑफ वाटर इज देयर, and sorry 80% of water is there and 20% of solid part is there. So initially, and finally, once juice is taken out, of course you cannot take out full water,
but once juice is taken out, it was left with 20% water and 80% is solid is there, right? In terms of percentage. So find how many grams of oranges are required for 300 grams of juice. 300 grams of juice के लिए हमें कितना oranges required है ना? Those number of oranges will be more than 300 grams, maybe 400 grams or 500 grams, right? So let's start with 100 grams, है ना? अगर मैंने बेटा 100 grams of juice लिया है, हाँ जी, सर हम लोग को 80% वाटर वाला ऑरेंज लेना है कि 20% वाटर वाला ऑरेंज लेना है? बेटा क्वेश्चन समझो ना, आपने जो ऑरेंज लिया उसमें 80% वाटर है, 20% सॉलिड है. वंस यू हैव टेकन आउट जूस, जो बच गया, कचरा बचा है ना, वो गीला होगा, ऐसा नहीं है कि सारा जूस चला गया. जो कचरा बचा है उसमें 20% वाटर है और 80% सॉलिड है. तो यहां से यहां पर ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ये आपका जो है जूस की मिक्सी है, ठीक है. तो यहां पर आपने जो डाला तो 80% वाटर था उसमें और 20% सॉलिड था. यहां से आपका जूस निकला और यहाँ जो कचरा बच गया उसके अंदर 80% solid and 20% water is there. ठीक है. So question is how much of oranges are required so that you get 300 grams of juice. तो हम पहले किसको डिकोड कर रहे हैं? If I have started with 100 grams of orange, on 100 grams of orange में कितना वाटर था बेटा? 80 grams. और कितना सॉलिड होगा? 20 ग्राम्स. ठीक है. जब आपने जूस निकाला उसके बाद जो सॉलिड बचा है ना, वो जो सॉलिड है वो फॉर श्योर 100 ग्राम से कम होगा क्योंकि कुछ जूस निकल चुका है. ठीक है. अगर वो सॉलिड हमारे पास लेट्स से 40 ग्राम्स आता है, दैट मींस वी गॉट 60 ग्राम्स ऑफ जूस. ठीक है. वो जो सॉलिड बचा तो उसमें जो आपका रेसिड्यू बचा है उसमें कितने ग्राम्स का सॉलिड होगा बेटा? जो रेसिड्यू बचा उसमें कितने ग्राम सॉलिड होगा? 80% ऑफ 40. नहीं बेटा, 40 तो हमें गिवन नहीं है ना, आई वाज जस्ट एस्टिमेटिंग. 20 ग्राम. 20 ग्राम, क्योंकि यहां से जितना भी सॉलिड आपने डाला उसमें से वो सॉलिड यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया और कुछ जूस वो यहाँ पर आया और बहुत सारा जूस यहाँ बाहर निकल गया. ठीक है. तो जो सॉलिड बचा उस सॉलिड में सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड विल बी देयर जो इनिशियली था. इनिशियली कितना सॉलिड था? 20 ग्राम्स. सो सॉलिड लेफ्ट इज 20 ग्राम. ये 20 ग्राम जो है ये कितना परसेंट फॉर्म कर रहा है? 80%. 80%. अगर 20 ग्राम्स है तो 20% कितना होगा? 80% is 20 grams. So 20% will be how much? Unitary method लगाओ. 5 ग्राम. 20 by 80 into 20, 5 grams. So 5 grams. And finally the residue left thus is 25 grams. तो आपने ऑरेंज डाले 100 ग्राम्स के, राइट साइड में जो रेसिड्यू निकला वो 25 ग्राम्स. तो लेफ्ट साइड में जूस कितना निकल गया? 75 grams. 75 ग्राम. So you'll say with 100 grams of orange. बेटा ये level 3 का क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ना आए, but don't mind, है ना. I'll take just one question of level 3, that's it. 100 ग्राम of orange हमने डाले तो उसमें हमें 75 ग्राम्स का जूस मिला, राइट. इसको रिवर्स में लेंगे. 75 ग्राम जूस के लिए आपको कितने ऑरेंज चाहिए थे बेटा? 100 ग्राम ऑफ ऑरेंज. So 100 grams, sorry, 300 gram of juice के लिए you need how many grams of orange? So unitary method. 400. हाँ जी, 300 by 75 into 100. So this is 400 grams.
Ronak, let us know once you have copied. Yes, sir, copied. Okay. Cost price is the price in which I have made a purchase. Okay. If I am selling it at more than my purchase, then that selling price is with profit. If I am selling it at less than my original purchase, then that is called as loss. We will say that profit percent is same as increase percent, which is increase amount upon original into 100. Increase amount is called as profit in this case. Original is cost price into 100. ठीक है, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है और उसको 120 रुपए में बेचा, बट अगर मेरी वो चीज नहीं बिक रही है डायरेक्टली, मैं उसके ऊपर एक टैग लगाकर उसको अपनी शॉप में टांग दूंगा. ठीक है, जो मैंने उसके ऊपर टैग लगाया 100 रुपीज की चीज थी, मैं उसके ऊपर जो है टैग लगा दिया ₹150 का. तो ये जो आपका इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज करके मैंने जो टैग लगाया है, इस इंक्रीज को बोलते हैं मार्कअप. मार्कअप मीन्स कितना परसेंट, कितना ऊपर करके मैंने मार्क किया है. तो यहाँ पर मार्कअप आपका हो जाएगा 50, और इसी को परसेंटेज में बात करेंगे तो मार्कअप परसेंटेज. मार्कअप परसेंटेज इज कितना परसेंट मैंने ऊपर करके मार्क किया है. तो ऊपर करके मार्क कर रहे हैं तो दैट इज इंक्रीज करके कर रहे हैं. तो यू विल से मार्कअप परसेंट इज सेम एज इंक्रीज परसेंट. इंक्रीज परसेंट इज इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज यहां से यहां तक जाते हुए कितना इंक्रीज हुआ आपका, मार्कअप जितना था उतना इंक्रीज हुआ है ना, दैट इज 50 रुपीज इंक्रीज हुआ था. तो मार्कअप अपॉन ओरिजिनल इज जहां से एरो शुरू हुआ है, दैट इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100. दिस इज मार्कअप परसेंटेज. मैंने 150 में लिखा. समर्पण इज कमिंग टू माय शॉप. He is saying, sir, I am your old student. I need a discount. So discount means he is not ready to pay me 150 rupees, which I had marked it on the item. He is paying is it little bit less. ठीक है, तो कितना डिस्काउंट मिला. डिस्काउंट इज 150 की चीज 120 में मैंने बेची है, तो आई हैव गिवन हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹30. दैट इज MP माइनस सेलिंग प्राइस. अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो मैंने क्या उसको इंक्रीज करके बेचा या डिक्रीज करके बेचा, बताओ बताओ. मैंने आइटम प्रोडक्ट को जो MP लिखा हुआ था उससे इंक्रीज करके बेचा या डिक्रीज करके. I sold it at more or less डिक्रीज करके ना. Discount percent is same as decrease percent. Decrease percent is decrease amount upon original into 100. मैंने MP से उसको कितना डिक्रीज किया, that is my decrease amount, right? So decrease is, discount is what is I have decreased it, discount upon original, arrow जहां से start हुआ that is mark price into 100. चेक कर लें. राइट, अब सेलिंग प्राइस है ना. समर्पण इज सेइंग कि सर 120 रुपीज सेलिंग प्राइस. आई सेड ओके, यू बाय इट इन 120 रुपीज, बट
Instead of taking 120 from Samarpan, I took from Samarpan 130 rupees. 130 क्यों? समर्पण तो अलग. He started fighting with me. Sir, 120 में बात हुई थी. You are charging 130. I said this is billed price because for each item I am selling, I have to pay tax to the government. So tax is getting added up here. है ना? That's billed price is there. So जो tax आपका add हो रहा है, so tax is billed price minus selling price, and tax percentage is same as increase percentage, increase amount upon original into 100. So this is what we get. ठीक है, copied है ना, आप screenshot. I'll post it on the group. From there you can copy it. ठीक है, let's compare it. बेटा अगर आपको percentage clear है तो you won't face any problem in CP, SP and profit. If question is if 20% more than X is 100, find X. ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. 20% मोर देन x इज 100, फाइंड x. 20% मोर देन 100 हम क्या बोलेंगे? दैट इज 100 प्लस 20% और 120%. 120% ऑफ x इज मींस इज इक्वल टू इज 100. ठीक है. नाउ सेम क्वेश्चन इन SP, दिस विल कम एज क्वेश्चन विल बी if I made profit of 20% at SP of 100, find CP. तो बेटा हमने ऊपर गांधी जी का चश्मा जो बनाया था, वी हैव गॉट CP हियर, यू हैव गॉट SP हियर, फिर उसके बाद MP होता है. MP से हमें कोई काम नहीं है. यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट या लॉस होगा. दिस इज प्रॉफिट इज देयर, प्रॉफिट ऑफ 20%. SP is 100, SP is rupees 100. This is X. ठीक है. प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज परसेंटेज में आएगा? इंक्रीज परसेंट. अगर 20% प्रॉफिट है तो दैट मीन्स 20% मैंने उसको इंक्रीज करके सेल आउट किया है. इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट 100% ऑफ CP, आई हैव सोल्ड इट एट 120% ऑफ CP. So 120% of cost price is equal to selling price. ठीक है. इसका मतलब है इंक्रीज परसेंट मैंने 20% इंक्रीज में करके बेचा है. किसको? X को, है ना. सेम थिंग एज ऑन टॉप. So this is 120% of X is equals to 100. You know, you can solve this. हाँ जी, clear. I'll post Socrates on basics of CP SP today. So let's see who can solve that. ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लें अब. क्वेश्चन
find MP if I sold a product at rupees 40 after 40% discount. Okay, Divyansh, Manol, Shyanshu is wrong. Prash, do it again. Very good, Rishita. Hanji Pratham. Others, just pay attention, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि ये अब तक, है ना, विद इन दिस टाइम इट शुड हैव बीन डन. सो फाइंड एमपी. आपको एसपी गिवन है बेटा. A product is sold at an SP of rupees 40, so SP is 40. Then we have MP is there. ये हमें पता नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक गांधी जी का चश्मा. दिस इज व्हाट इज डिस्काउंट इज देयर. कुछ कम करके हमने इसको बेचा है. कितना कम किया है? 40% कम किया है. तो मैंने 100% ऑफ एमपी पर नहीं बेचा, मैंने कितना परसेंट एमपी पर बेचा उसे? फटाफट. 60%. 60%. 60% of marked price is selling price, है ना. अगर आप फॉर्मूला वाइज देखें, ये 60% कहाँ से आया? दिस 60% has come 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ठीक है, 100% minus discount percent, that is from, that is what is 60% is coming. ठीक है, so 60% of MP is SP, that is 60 by 100. 60 by 100 into MP is selling price, which is 40 rupees. Solve it to get your answer. Marked price is 66.67. Hanji, done. Okay, some question. Sir, how will this question be solved? Someone has asked a question. A person has a certain sum deposit in a bank at 5% per annum. The bank increases the rate of interest from 5% to 6%. After increase in rates, the same person deposit 2,000 more in his account. The annual interest received by him is more than before. Find this. Okay. बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है. Let me see if I can copy and paste it. Okay. Everyone पे I'm sending the question and thing. Okay, everyone please read this question, then we'll solve it.
राइट. तो बेटा पहले उसने जो है एक प्रिंसिपल अमाउंट था P, है ना, उस पर जो है he was getting 5%. ठीक है, 5% मीन्स टोटल इंटरेस्ट he was getting. Interest he was getting was 5% of P. That is, he was getting 5 by 100 into P. This was the interest he was getting initially. ठीक है, फाइनली जो है वो P अमाउंट पर ही स्टार्टेड रिसीविंग 6% ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट इज 6% ऑफ प्रिंसिपल, इनिशियल प्रिंसिपल P प्लस 2000 रुपीज एक्स्ट्रा ही डिपॉजिटेड. तो उस पर उसको 6% का इंटरेस्ट मिला. दैट इज 6 बाय 100 इंटू P प्लस 2000. He is getting 220 rupees more now. So that means 6 by 100 into P plus 2000 minus 5 by 100 into P is 220 rupees. ठीक है शौर्य, इक्वेशन नोट कर लो, है ना, यू कैन सॉल्व इट. So this becomes P by 100 plus 120 is 220. So principal P is coming as 10,000. चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस जहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं. सो क्वेश्चन इज फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट if my markup percent was 80% and discount was 60%. So I purchased an item and I marked it up by 80%, and then again Samarpan came and he took 60% discount from me. So find if I made a profit or loss in terms of percentage. Very good, Manol. Correct answer by Manol. Divyansh. Shriyanshu, it's wrong. Avni, correct. Very good, Avni. Arush, it's wrong. Prash, wrong. Angel, wrong. Jayashri, correct.
हाँ जी, प्राश नॉट करेक्ट, अयान करेक्ट. कुछ स्टूडेंट्स जो है, दे आर नॉट मेंशनिंग वेदर इट्स अ लॉस और प्रॉफिट, सो यू विल लूज मार्क्स. ठीक है. आरुष नॉट करेक्ट बेटा. चलो वापस देखते हैं ना, गांधी जी का चश्मा यूज करेंगे एंड विल सी हाउ इजी इट इज. दिस इज सीपी कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, सॉरी एमपी मार्क्ड प्राइस, and here you have got selling price. Now if I'll assume this as ₹100, अगर मैं ₹100 लेकर शुरू करूं, मार्कअप परसेंट वाज 80%, सो मैंने उसे 80% अप करके जो है मार्क किया है. दैट मीन्स माय मार्क प्राइस इज हाउ मच? मार्क प्राइस कितना होगा बेटा? 180% of 100. ₹180 है ना, 180% ऑफ सीपी, सो दैट बिकम्स ₹180. इस पे मैंने जो है डिस्काउंट दे दिया. डिस्काउंट कितना दिया? 60%. अगर 60% मैंने डिस्काउंट दिया है तो दैट मीन्स आई हैव सोल्ड इट एट 40% ऑफ ओरिजिनल प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 40% ऑफ 180. 40% ऑफ 180 इज ₹72. मैंने परचेज कितने में किया? ₹100. सोल्ड इट फॉर ₹72 एंड दिस गैप इज ऑफ ₹28. ठीक है. ये 28 कम है या ज्यादा है? 28 लेस में बेचा है ना. तो डिक्रीज परसेंट इज लॉस परसेंट. सो लॉस परसेंट इज लॉस अमाउंट अपॉन ओरिजिनल into 100. So loss percent is 28%. हाँ जी सर, the loss of 28 rupees, 28%. Excuse me, sir. हाँ जी प्राश. Can you please explain this question again? हाँ जी ओके. ठीक है. What I will do is I'll take one more example and in that I will take it. ठीक है. देखो आपके पास तीन चीजें हैं बेटा. One is CP, then is SP, then is MP. ठीक है. इनके बीच में जो है जंप करने के लिए आपको रिलेशन गिवन होगा. इस क्वेश्चन में आपके पास सीपी मिसिंग था. ठीक है. परसेंटेज टर्म्स की बात हो रही थी. सो लेट्स से इफ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, फाइंड सीपी फाइंड मार्कअप परसेंट, है ना. फाइंड मार्कअप परसेंट if I made profit of 50% after giving 20% डिस्काउंट. मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद भी मुझे जो है 50% का प्रॉफिट हो गया, तो मार्कअप परसेंटेज कितना था? ठीक है. तो यहाँ पर तीन कड़ी है हमारे पास. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ठीक है. सीपी से एमपी तक जाते हैं तो वो क्या होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज मार्कअप परसेंट. कितना ऊपर आपने मार्क किया है. सीपी से एसपी जाने के लिए प्रॉफिट परसेंट, एंड एमपी से एसपी जाने के लिए डिस्काउंट परसेंट, है ना. ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. नाउ आई made a profit of 50%, so this is a 50% profit after giving a discount of 20%, है ना. अब इसमें रिवर्स गाड़ी से शुरू करते हैं. ठीक है. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. आप चाहो तो एमपी को 100 मान के स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं सीपी को 100 मानूंगा क्योंकि मार्कअप परसेंट निकालने के लिए आई नीड ओरिजिनल प्राइस एट डिनोमिनेटर, सो दैट मेक्स माई कैलकुलेशन इजी. अगर मैंने 100 रुपीज में बेटा किसी चीज को खरीदा था तो मैंने इसको सेल आउट कितने में किया है? आई हैव मेड 50% ऑफ प्रॉफिट. तो 50% इंक्रीज करके सेल आउट किया है.
So my selling price is how much? 150% of 100. So this is 150. हाँ जी, डिस्काउंट बताओ फटाफट एनीवन. एमपी क्या होगा बेटा? %20 लेस करके एनजी एमपी विल बी हाउ मच? That will be 80% of, sorry, SP will be 80% of marked price, है ना. मैंने 100% में बेचा ही नहीं, मैंने 20% लेस करके बेचा है. तो SP is 80% of marked price. यहाँ पर SP कितना है हमारे पास? SP is 150. This is 80% of marked price. So marked price is how much? Marked price is 0 से 0 cancel. This is 150 or 1500 upon 8. This is my marked price. 750, 375 by 2. ठीक है, 375 by 2 और 187.5 is my marked price. तो 100 रुपीस की जो चीज थी उसको मैंने मार्क कितना किया? 187.5. तो कितना ज्यादा मार्क किया मैंने, कितना इंक्रीज करके मार्क किया? आई मार्क्ड इट 87.5 रुपीस मोर. सो मार्कअप परसेंट is marked up price upon original into 100. So markup percent is 87.5%. तो जो आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉफिट, डिस्काउंट एंड मार्कअप, इन 3 में से कोई 2 चीजें आपको गिवन होंगी, थर्ड यू विल हैव टू फाइंड. ठीक है, अप्रोच तीनों में एग्जैक्टली सेम है. सो यू विल मेक दिस display presentation and then solve it. हाँ जी, understood? Yes, sir. क्लास क्या हो गया? एनर्जी बहुत sir. कम है. Yes, sir. यस यस, ओके, वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें. Sir, till when is the class? बेटा 9:15. I may extend it by 5-10 minutes. Okay, CP is rupees 500. Markup percent is 20%. Discount is 20%. 30%. Tax is 40%. Find build price. चलो सॉल्व करेंगे.
Anji. Correct answer by Madhav, Manol, Divyansh, Shaurya Saxena, Ayan. Very good. Very good, Avni. Okay, others, let's see here. तो बेटा ये सिंपल परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 500 रुपीज से स्टार्ट किया है, मार्कअप जो है वो 20% है। मार्कअप इंक्रीज होता है या डिक्रीज? हाँ जी, आंसर इट, इंक्रीज। सो मार्क प्राइस जो है वो हमने 100% में नहीं सेल किया है, वी हैव सोल्ड इट एट 120% ऑफ CP. So this is 120 by 100 into 500, so that is 600, right? Second is selling price, ठीक है। सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगा? मार्क प्राइस से आएगा। अब यहाँ से यहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमने डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट जो है इंक्रीज है डिक्रीज है बेटा? डिक्रीज। 30% डिक्रीज दिया तो कितना बचा? 70%. 70% of marked price. This is 70 by 100 into, ठीक है, marked price was 600, so this get cancelled, so selling price is 420, ठीक है। So this becomes your 600, this becomes your 420. अगर यहाँ पे कुछ लॉस वॉस का पूछा होता तो हमें लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 80 रुपीज का। और लॉस परसेंट अगर पूछा होता, लॉस परसेंट इज लॉस अमाउंट अपॉन ओरिजिनल into 100, right? So this 0 0, so loss is 16% loss. But हमसे build price पूछा That है। is my answer correct. हाँ जी बेटा। यशरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आपके बेटा। So build price, अगर हम build price की बात करेंगे तो build price is how much? Tax percent is increase or decrease? Increase. Increase. तो 40% increase होकर कितना हो जाएगा? 140. 140%, है ना। So build price is 140% of selling price. So 140% of SP. This is 140 by 100 into 420. 0 0 0 0. This will multiply 420 plus 84 and 160 this. So this becomes 588. Okay, so your answer is rupees 588. That's your build price. Yeah, understood? Yes, sir. Okay, so tomorrow sir. we'll be doing around 5 to 6 more questions on this CPSP, and then we'll do simple interest and compound interest. You know, tomorrow class will be most probably for 1.5 hours. Chalo, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Sir. Good Thank you, night. sir. Yes, sir. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome.